I think we should start now. Students can join us. Abhishek sir, Hmm. Yeah, Ashika, hi. can we start now? Yeah, sure. So, Okay. So, as you all know, my name is Ashika Shrivastava. I'm the chapter coordinator of Punjabi Chamber of Commerce. So, today we are here show like for student showcase presenting innovative business ideas to the mentor. Today we have uh, Today we have Mr. Abhishek Gulia, partner of Agility Ventures Studio. He has a decade of 10 plus years of experience in startup ecosystem as a founder, mentor, and investor. So on behalf of entire PCC, I welcome you, sir, as a mentor for today's session. We have our students with us with their business ideas. So we can start with one by one. Krishnangi, we will start with you. okay. Before that, should I say two words? If that Yeah, would be sure, okay. sir. Sure, sir. Sure, Okay. sir. Thank you, Ishika. So I think it's a fantastic opportunity for a lot of students who are here. Hi everyone. Ishika mentioned, my name is Abhishek Gulia, and बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, बहुत सारी चीजों को इन्वेस्ट किया है। एज एजिलिटी वेंचर्स हम लोग नए नए स्टार्टअप्स में ना इन्वेस्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने शार्क टैंक किस किसने देखा है? कैन यू रेज योर हैंड्स? Yeah, okay. So I've got one hand from Krishna Ki. Okay, so we have got Jignasa also. Okay, that's amazing. और किस किसने शार्क टैंक देखा है? यूट्यूब तो बहुत लोग देखते हैं ना। Oh, very nice. तो somewhat similar जो शार्क टैंक में होता है, we judge ideas, we figure out, but more important from that, we figure out, which ideas, which startups, which entrepreneurs have an interesting potential. We help them, support them, so that they can grow to the next level. And I think this is a fantastic initiative done by Punjabi Chamber of Commerce, that they are giving you such opportunities to interact with mentors and such a young age. I would say that. I think that's amazing, great work, Ishika and team. And yeah, let's see how it goes. Okay. And whatever questions you have in the session या फिर कुछ भी feedbacks होते हैं, we will be having an interaction. इसको ना थोड़ा सा serious वाला नहीं करना, चिल थोड़ा सा करेंगे। तो उससे क्या होता है कि सीखने को भी मिलेगा एंड डायरेक्शन भी मिलेगा। ओके, साउंड्स गुड। ओके, ऑसम। तो आई थिंक इशिका यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। First of all, I request all the students to put on your cameras so that you can interact. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। Avinash, Jigyasa, Pavitveer, Karaj, please put on your camera. We can start with Krishnangi. Krishnangi, let's Good, start with you. yeah, good evening, sir, and good evening, everyone present here. Let me introduce myself. I'm Krishnangi. I'm from Jaipur, Rajasthan, and I'm first year law student at RJNWL Punjab, Patiala. And as we have come to the idea submission, I thought, do I have any startup idea which I can bring about to bring action or something? Then I realized I have just started my first year and I don't have much experience to, you know, storm out my brain and bring up some startup idea, but I do up from my knowledge of financial various knowledge that I've gained, like through, of course, social media and stuff, that what I can do for financial freedom as well as to just take one action towards the same, towards the startup journey or entrepreneurship journey. Also, I attended the innovation course of online course, which talks about how startup is the innovation is the starting point. Like when you start by finding out problems you want to solve in your own life and bring out solution for that, and which becomes a startup or with people like in general.
Then I realized I have not found out any good crucial problem that I want to solve right now, but I do am focused on attaining financial freedom as of now to be able to do so in near future. So in respect to that, I have wanted to share my screen and present my plan. Yeah, Mhm. yeah. So this one is my plan. After being an active user of LinkedIn, and although I'm not a active user of Instagram, but I do know the importance of Instagram and how people have scaled not only their career, their personal brand, and every financial success and everything and or every sort of thing through Instagram. I do realize it's the one way I can start. Uh, because I do not I have zero budget to invest in it or in starting. So I have thought of focusing on in LinkedIn and Instagram for content creation. This is how I would like to bring a audience, and thus establishing a niche and catering to the demands of the niche. I would like to bring out uh, products in the market. For example, I have observed many content creators, such as many writers of sorts. Like first, they bring out newsletters. They have an engagement with the audience on Instagram and stuff. And after doing so, they start making their newsletters. And I've been active newsletter reader. So first, they send out free newsletters, and slowly, gradually, when they think they have an active, consistent engagement from the audience, they start making it subscriptionist, a premium subscription based. So you only read half of it, or you only read only 1 week or 1 day a week of sorts until you pay for a subsequent amount for subscription. Same goes with Patreon. So I want to build two different uh, niches of audience on LinkedIn and Instagram. And after this, I want to build a customer base, and that's which determines my product or sale there onwards. Because right now I'm focused on that. For that, building, I think there are certain challenges that I have in my mind right now, which I think would be the first blocks in this journey. That would be finding a good team, as in finding a group of certain set of people who we work together to build this. Because I know building even a starting a journey on LinkedIn, Instagram, or YouTube is not a easy task to handle. And considering that we have other priorities as of law school and stuff, we also need a good understanding of how as a team can come together and build it. So I think this is my first challenge, that is building a good team. Secondly, if I'm starting on that, I need to have a good training and algorithm of those platforms. That how does LinkedIn or like LinkedIn posts have certain criteria that if you are posting something, it is ought to have very limited word character limit, and how presentable it is and how active engagement it is. Like for example, I've been following Niharika Kaur Sodhi on in LinkedIn, who is an active in LinkedIn content creator, I must say, and who's started her own course on the same how same she built a base on in LinkedIn and thereon providing her services. So that way, I wish I could have a good algorithm training on both content creation strategies and consistent engagement works. Then management skill and balancing. I think that is one my weak spot. I think according to me, what I have gathered, my strength and weaknesses. Strength would be my growth mindset. I would like to, I'm open to working on new things and challenges. I wish to come out of my comfort zone and work towards things. But weakness would be similarly balancing. How do I balance different sorts of things at the same time? Multitasking is not an issue, but efficiently balancing it with time and energy is, I think, where I'm lacking. I put one like in one go, I can put go all out. I started a website earlier in 10th and 11th because I like to write. But what happened was in starting 15 to 20 days, I was so high on dopamine and energy. I put it all in. But as it started fading away, I think that is a problem with Gen Z. As in, I think we start with a good energy, but we lose interest. But I think that is because we do not know how to plan things out with patience. And I think that is my weak spot. I want to work on that to scale it. Thirdly, strategy and content creation. It's like I should have a proper plan, right? If I'm making content, what content I'm focusing on, what are the questions I want to answer, and by these content, which kind of demographic of audience I'm attracting. So that is, I still need to figure out. Although I really think it would be more on self growth basis, because I'm interested in like I read self help books and I read fiction and non fiction, which help me enhance my character. So I would like to focus on that, which not only help me grow, but also I'll be more
it will be easy for me to put out content like that. So I think, and because we need more output, productive oriented positive content on social media, which helps everyone. Like Iman Ghazi, I mean, all the content creators I follow, they are like helping people up along with bringing themselves up. So it's like win-win situation for everyone. So I want to work in that aspect. And I think then, that's a good idea, I would say. The content is booming up now, the lot of things happening. So what is your, so I have understood like what is your overall direction. Okay. yeah, So I think direction is to, create impact via content. Maybe it's written content, maybe it's, building those subscribers and giving them value and then taking it across. yeah, Um, you said something around financial freedom, and then you said something around mental wellness and health and all of that. yeah. So I think that's good. Abhi, like, have you chalked down key which area do you want to work in on? I understand the plan of action. It's a very interesting plan of action. But उससे पहले जो first step है कि why and what. अभी वो थोड़ा सा research किया क्या है अभी? Instagram, I would like to work on building the brand on journey vlogging. Like, people are more interested in what you are doing, as in you see vlogs a day in my Hmm. life and stuff. So I think doing or like like pictures, photography. If you have like aesthetic account, that is how you bring in audience in on Instagram. And that is how I could, if I create a product based on merchandise of that sort, people would generally would come in. LinkedIn would be more focused on very minimized or minimalistic content, which helps the user or the consumer to get a grasp of it, and then maybe probably progress it to newsletter, because everyone likes to read newsletters of sort because everyone wants to be productive. Yeah, but I Yes. think my why is still unclear. But I am Yes. focused on ki that is why. The देखो, why is my first. Yeah, yes, yeah, I think इसमें ना आप ये कर सकते हैं. It's a very very good thought that you have scattered out couple of things. कोई भी ventures usually जब start होता है ना, there are two basic things, ठीक है ना? क्या तो आप okay. उसमें value कर रहे होते हैं, या फिर आपका personal why उसमें इतना strong होता है कि आपका एक product direction बन जाता है, ठीक है? Hmm. तो first year, it's not that कि you don't you started with saying कि आपको कोई experience नहीं है, अभी तो आप नए हो and all that. But you have been in this world for 18 years, 19 years. Yeah, Yeah, I do. 17. Yeah, So yeah, something that the world has taught you, right? It can be maybe you have seen a lot of friends of yours are doing multiple careers. They're in various colleges. Why don't you take out a newsletter for schools, where students can read it and understand what careers are there, or it can be something around something personally you're drived across. So what the idea is ki this is all great that, once you're executing it, but pick up something and then start working on it. So then you'll be actually able to understand what is the real product, what how the real entrepreneurship would work, and then फिर ये thoughts से actions में convert हो जाएगा. ठीक है? So I okay. think Yeah, pick up a product which people want to know about, and then start some sort of marketing halka sa, and you will be able to figure out a lot of entrepreneurs I have seen, they are facing on a daily life, they have solved a couple of problems and they just don't know it. So it is a self discovery journey, especially on the start. तो एक बार थोड़ा सा अपने आप को और देखो, what can be interesting, and start with something. Okay, so then you'll be able to yeah, achieve, let's say, I want to have maybe it's a career counseling thing, or maybe it's a lawyer thing for that sake, because you're first year in law, right? yeah, So journey of yeah. a lawyer, then it can go across as you grow, the channel grows, and that ways things can be interesting. So figure out one thing and then put some numbers, maybe do it 3 months, and then maybe next time we're catching up, then something more productive would be on. और ऐसा गलत करने का मत सोचो कि मतलब ऐसा अरे यार ये मैंने कर लिया तो लाइफ में यही करूंगी. ऐसा नहीं होता. I understand. एक बार करना शुरू करो. Let the problems come to you. Let you get, you'll be getting perplexed, you'll be getting confused, and hard work होगा, फिर उसके बाद निकल के आएगा. Then you'll be able to see what startup करना है, क्या करना है. But I think good work, good research and initiative in that direction. All the best. Uh,
Thank you. May I just add like the last 2 points I want to convey or like express? That would be using AI because I think everyone is using AI. So I think one of the challenges I think I would be facing head on would be AI. Like, how would Right. my content be different from the AI contented posts that everyone is creating nowadays? Because easily AI is making much more attractive than a 20 hours spent on creating one post. So how would I effectively use AI in my posts? Like if I want to do smart work and reduce time and delegation to accommodate it and be fast in it, and also would it be different from the AI produced content? So I think that would be one task I want to answer in this coming month or so. And lastly, would yes be to find my strong word. I actually have a lot of ideas. But the thing is, kind of seem weak. Either someone else is already doing, like many people are doing that. So I feel like how can I bring in something different to the table? Or if it's like it's very weak, it does not have That's a fine. strong ground. That's fine. Start with something. Lot of people just don't start. That is the problem. Analysis paralysis का एक problem statement रहता है. Start with something. Weak है, strong है, छोड़ो. मतलब the best things that I have seen started with something very common. Like you know this guy Aman Gupta, boat founder. क्या कर रहा था? ईयरफोन से तो बेच रहा है. बट देन इट वाज लाइक नहीं, वो करते करते समझ में आया कि अच्छा ये मार्केट है, ये नीड्स हैं, चलो अब कस्टमाइज करते हैं. लेकिन जब तक आप अंदर ही नहीं घुसे ना, तो यू डोंट नो व्हाट इज इनसाइड द स्फीयर. स्टार्ट. डोंट वेट सो मच. जस्ट एक बार वाई अलाइन कर लो. और अभी तो यू आर एट अ वेरी यंग एज. डू सम वेंचर्स, बी पैशनेट अबाउट इट एंड फेल. देन यू विल लर्न एंड इट विल हैपन. I need to start failing and do अरे that. स्टार्ट. इट Yeah. इज इट इज important, very important. All the best. Thank you. Thank you. Moving ahead, Karaj, you can share your business idea. Yes, everyone, good morning. So I am now sharing my business idea. Yeah, go on. And So Karil, where are you from? sir, I आप am कहाँ से? district Fatabad, state Haryana. Right. And sir, my business is related to agriculture business. So nowadays, as I am seeing in my society that there are lots of products which we are consuming nowadays from directly from the top. But when we consume it, there are lot of diseases which we get from that food, because when we grow the food on field, there are lots of pesticides, because now the climate is changed. So every day, as I'm seeing locally, that there is no disease, and for that disease there is no pesticide which our farmers are using. So if we focus on the customers, there are lots of customers which are ready to pay price for the organic products. So what are organic products? Organic products are those products which are now growing without those pesticides, or naturally we can say that in old times when agriculture was started, there was no that pesticide and there was less, because the food was growing by the nature. So there was rain on time. There was like staff taking care of the field. Now it is became a business. So every farmer wants that we make more production from 1 acre. So to make the more production, they are using lot of techniques. Ultimately, when we consume those products, then those are very dangerous for our health. As we are now seeing that people are having breath disease and heart disease, and every third or fourth person have the health problems. Right. So as I have seen that people are ready to pay the price for the good quality, but they are not having those products in the local market. So my hopes that first I should market in my local area that I am now growing those things, and if they are ready to buy directly from me, so I will start from some medium size or small startups. Like I will sell wheat, honey, and those products we are consuming day by day. Like there is rice now. Right. This is the season of the rice.
If, farmers are cultivating rice. So if I make them in my confidence that yes, they are ready to buy from me, then I will make my own banner. So like in farmers in Punjab, there is a district Bathinda. So what are they doing? That they are not selling their products in the market, like in local mandi. They are, Hmm. but they are making their own products. And after making their products, they travel from local area to cities like Chandigarh or like Delhi in our cities Right. area, and there they found the customers. So there is a like very rough idea. I'm still researching on this because it is require a lot of research and guidance from the experts. I have uh, in the last month there was a seminar by the Punjab Agriculture University Ludhiana. I had joined that seminar. They, there were doctors which experts on this areas, and I have taken a suggestion from them that how can I grow, because it is very now it is very difficult, because if we talk Hmm. about the organic, it is easy to say that yes, I can grow, but when we start practically, it is very difficult, because Hmm. without pesticides there are many types of disease, like we human beings have disease, crops also are having disease. Right. So, but we can do that. First, we will have challenges in first 2 or 3 years. Like nowadays, soil are also having not a good health. If we check the soil of a field Hmm. or any crop, it is not in having good health. So, what we have to do that first 2 or 3 years, we will make sure that our soil is in good health. Then we will grow those products, and then we will make Right. our customer directly. Right. So, Right. like farmers sell the products in wholesale. Wholesale. Hmm. Yes. This is very rough idea, but still I'm researching. It will take some time, It's a very good but idea. Yeah, I it's am just a very interesting want idea. to share it. Uh, Yes, so organics are products which are now in demand a lot of, like, in India and abroad. So things a lot of things are happening. In fact, there are good Yeah. brands also. There are in fact farmers who have taken up this initiative, and वो अपने farmlands को 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जो है उनको convert कर रहे हैं into organics, because usually एक cycle होता है, 2 से 3 साल उसको पहले तो लगते हैं डी फर्टिलाइज होने में। आई वुड से दैट फर्टिलाइजर्स होते हैं जो पेस्टिसाइड्स Yes, sir. उनको निकलने में 2-3 साल लगते हैं, 2 साल एटलीस्ट। निकालने एंड में लगता है। प्रोसेसिंग होता है देन, बिकॉज इनके सबके सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज सर्टिफिकेशंस एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। तो वो दिस इज द प्रोसेस दैट कैन हैपन। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब यू कैन डू 2 थिंग्स, ठीक है। यू आर इन कॉलेज अभी, और हैव यू ग्रेजुएटेड? No, sir. I am doing practice in district of Fatehpur. I am as a advocate. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें ना आई थिंक व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज देयर आर दीज लोकल agricultural units which are there, who help farmers set up these kind of farms. First of all, get in touch with them so that they can guide you to the farmers who are actually doing it, है ना? And meet 10 farmers. Yes, sir. Yes. Okay, meet Yes, 10 sir. farmers who are doing organics, and if you want to get in there, understand what are they lacking. I'm saying what are they lacking as a business, because the whole business is a long process. Acquiring of land, then उसको चीजें करना है, फिर ग्रो करना है, फिर सेलर ढूंढना है, एंड ऑल ऑफ दैट। यूजुअली बहुत सारे लोग सेलर ढूंढने में या चीजों में थोड़ा सा उनको रहता है। तो सिंस यू आर ऑलरेडी इन लॉ, यू माइट बी हैविंग लॉट ऑफ डाइवर्स कनेक्शंस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद समथिंग जहां पर आप उनको थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो कि भाई आप ये बिजनेस कर रहे हो, अच्छा है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं। एंड अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो फिर 10 के 10 लोग ना कुछ बताएंगे कॉमन में कि ये प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है, एंड देन दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग आइडिया टू स्टार्ट विद। बिकॉज ऑर्गेनिक्स में अगर आप घुस रहे हो तो यू हैव टू गेट इन लाइक 3-4 years, धीरे धीरे करके बनता है ये बिजनेस, अच्छे Yes, sir. रिटर्न्स देता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, राइट? तो एक बार Yes. आप उनके साथ थोड़ा सा बैठोगे ना, थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम ढूंढोगे, फिर उसको सॉल्व करवाओगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कराई, किसी का ये गया, तो आप है ना उस सर्कल में इंट्रोड्यूस हो जाओगे, है ना? तो उससे क्या होता है कि अभी आपको बाहर बाहर से आइडिया है ना?
वहां से ना एटलीस्ट पुट अ 6 months टू इट, 6 months 8 months टू इट, सो दैट आप थोड़ा सा काम कर पा रहे हो उनके साथ, भाई क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड फिर थोड़ा सा और आगे मूव करता है तो कस्टमर समझने के लिए आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे रिसर्च करना शुरू कर दो कि भाई कौन सा कस्टमर खरीदे, सारे नहीं खरीदते कस्टमर्स, है ना। तो कौन सा कस्टमर्स खरीदते हैं, तो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यस कि सर। आपको कौन सा वाला बिजनेस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिजनेस है, इसी बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस है। ऑर्गेनिक उगाना एक बिजनेस है, ऑर्गेनिक के सेलर्स ढूंढना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक और बिजनेस है, देन उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन करके एक्सपोर्ट करना एक और बिजनेस है, ठीक है। और फिर एक ओवरऑल ब्रांड बनाना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई ये वाले जो क्रॉप्स हैं ये कराच के यहाँ से आए हैं, तो फिर ये इसको ऐसे ऐसे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग बिजनेसेस है, और एक साथ अगर उस पर अटैक कर दोगे ना तो फंस जाएंगे, है ना। तो आप ये कर सकते हो कि ओके। पहले एक बार इसको अंडरस्टैंड करो, पूरी सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करो। तो जो जो की होल्डर्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक के ना स्टोर्स होते हैं, आपने बोला चंडीगढ़ है, दिल्ली है, या मतलब तो ये स्टोर होते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया के भी हैं और भी लोगों के हैं। इनके एक बार स्टोर पे जाके विजिट करो, और उनका जो स्टोर ओनर है उनसे बात करके देखो, अरे हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या थॉट है आपके, कस्टमर क्या देखता है, किस टाइप के प्रोडक्ट चलते हैं, क्या ज्यादा बिकता है, क्या कम बिकता है। तो आपको एक है ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बन जाएगी कि अरे चलो ठीक है, मैं ना अगर आपको अब उनके पास भी होता है कि अच्छा ऑर्गेनिक अगर मिल जाए, लेकिन क्वालिटी पैक वैक मिल जाए, थोड़े से कम रेट पे मिल जाए, तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो वहां पर आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो कि जो भी 8-10 लोगों से आपने बात करी है, उनसे बोलो कि यार एक बार थोड़ा सा आप भेजो अपना सामान, मैं थोड़ा पैक करके इनको देता हूँ, एंड लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। अगर हम वही चीज करेंगे जो और 10,000 लोग कर रहे हैं, तो फिर फंस जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, गैप ढूंढने हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और जब ये क्लियर हो जाता है कि गैप क्या है, तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री देयर आर ऑर्गेनिक फार्मर्स जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढो पहले, एंड देन हल्के हल्के करके ना यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। और इतना कैपेक्स हैवी भी बिजनेस नहीं है, कैपिटल भी नहीं लगाना ना इसमें तो। हाँ जी सर। खेत लेने में और फिर चीजें में तो कैपिटल लग गया ना आपका। आपको उसको लीज के लिए एटलीस्ट 5 साल की लीज के लिए लोगे, क्योंकि 2-3 साल तो उसको वो करने में लगा, फिर उसके बाद उसमें उगा रहे हो, ये कर रहे हो। तो आप उसको एक्टिव रखो थोड़ा सा ऑन द गो, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा थोड़ा सा एंटर करने से पहले एक बार 3 महीना 6 महीना ना ये सब काम कर लो, मार्केट रिसर्च कर लो। तो आपको ये पता लग जाएगा कि बिल्कुल आपको सर। एंटर इस पूरी सप्लाई चेन में, है ना, गैप कहाँ पर हाँ है। जी। बट आई थिंक वेरी बिल्कुल गुड, सर। गुड इनिशिएटिव। आई थिंक आई विश यू ऑल द थैंक यू। बेस्ट, एंड लेट्स सी थैंक यू हाउ सर। इट ग्रोस, ठीक है। हाँ जी, ये चलो awesome। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट एरिया है, इसलिए सर मैं करता रहता हूँ ये रिसर्च। नहीं, बढ़िया अभी मैं, बढ़िया चीज है। हाँ जी, इवेंट्स भी ज्वाइन करता हूँ, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी इस चीज़ में काम कर रही है। नहीं नहीं, वेरी वेरी गुड। आप प्रॉब्लम एरियाज ढूंढो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर यू बी एबल टू गेट इट अक्रॉस, ठीक है। बिल्कुल थैंक सर। यू। थैंक यू सो मच। जिज्ञासा। Good evening, sir. Good evening. ओके गुड। So let me first introduce myself. My name is Jigyasa, and I am a second year BBA LLB student, and I am currently studying in IIM Rohtak. Uh, ओके uh, so, so, ओके। uh, is my screen visible to all of you? नो। I think in the meanwhile, when since you are getting the screen up, Jigyasa, well, you Is can it get the now? screen up. I think there are other also. I'm not sure. Ishika, is it up? Can you see it? No. Okay, there's some Ishika, if issue. you have her plan, it'll be better if you can share the screen for her. Huh. I can share. Hmm. Awesome. In the meanwhile, all the folks who are sitting here, I think you all have some intent, some direction of entrepreneurs. If being an entrepreneur or being something जो मतलब कुछ करना है, I'll tell you one basic thing जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। देखो,
डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है कि आपका हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल्स में होते हैं, और वो चीजें सॉल्व करते हैं जब आप बॉडी में पेन होता है। सीएस क्या करते हैं? जब आपके बैलेंस शीट में पेन होता है, आपके बिजनेस में पेन होता है, तो वो अकाउंटिंग एंड वो सब चीजें करते हैं। जब आपकी सोसाइटी में पेन होता है, ठीक है, कुछ चीज है जो मतलब अरे यार ये ऐसे होती तो मजा आ जाता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, वो सब चीजें एंटरप्रेन्योर सॉल्व करते हैं। तो आपका जो प्लेग्राउंड है वो ये वर्ल्ड है। जैसे अभी ऑर्गेनिक का आइडिया है या फिर न्यूज़लेटर का आइडिया है, यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू यू नो क्रिएटेड समथिंग जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेल्फ वाला एक एंगल होता है कि मतलब मैंने प्रोडक्ट बनाया है, मुझे पैसा कमाना है, वेल्थ है, ये है वो ठीक है, दैट इज डिफरेंट। बट आप ये समझ के देखना, यू आर अ डॉक्टर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू मेक दिस अक्रॉस। सो आई थिंक वी हैव गॉट द स्क्रीन अप, राइट, यू कैन गो फॉर इट। Good evening, sir. So my startup idea is Legal Bridge India. So basically, this year I interned with District Legal Services Authority, Haryana. Uh, Actually, the government of India has provided a platform for every Indian citizen who lacks, legal assistance and who don't couldn't that is services authority. वो हम cost में आपको legal services provide करते हैं, right? And I worked with them, and I realized one thing, that even after providing such a big platform on national level, there are several people who still lack legal assistance in many ways. And according to Tata study, around 85% of Indian citizens couldn't afford legal assistance. I mean, एक hearing के लिए we have to pay at least, for high court hearing, अगर कोई अच्छा केस है, we have to pay at least 5 lakhs to the advocate. और everybody knows कि कितना lack of backlog है केसेस का, और एक केस कितना लंबा जाता है। तो एडवोकेट का फीस इतना पाइल अप होते जाता है, जिसके कारण लोग उसको ले नहीं पाते हैं। आई मीन असिस्टेंट अच्छे से ले नहीं पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ लीगल ब्रिज इंडिया। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ इट इज टू प्रोवाइड अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन सिटीजन्स को हेल्प करेगा लीगल असिस्टेंस में। We will provide, I'm still working on this startup, and one of my colleague has already has a startup named as Clat Data, जो बच्चे लीगल स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, Clat Data is for them. So in order to उसको एक स्टेप अप करने के लिए we have thought of legal bridge. Now there is first of all, why is the need of legal bridge? I have already explained it very well, that there is lack of access to legal services in India. And second, हमारे इंडिया में टैलेंट पूल बहुत ज्यादा है। आई मीन हरियाणा हाई कोर्ट के बाहर थाउजेंड्स ऑफ एडवोकेट्स बिना काम के हैं, आई मीन जिनके पास काम अभी अवेलेबल नहीं है। सो दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प देम एज वेल। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिन लोगों के पास काम नहीं है, एंड दे हैव secured a degree in legal studies, और उन लोगों को हेल्प करेगा जिनके पास लीगल असिस्टेंट एक अच्छे लेवल की नहीं है। तो ये दोनों को गिव एंड टेक रिलेशनशिप टाइप। और सर इसमें एक मेन जो हमारा पर्पस ये है कि वी विल प्रोवाइड इट इन द डिजिटल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के टाइम पे आई मीन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी अपना अच्छा काम कर रही है, बट स्टिल लोग उसको फिर भी अच्छे से उसका यूज नहीं ले पा रहे हैं। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत छोटे लेवल पे सेंटर्स बना रखे हैं जिन पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है। और आज के टाइम पे इंडिया में 6 मिलियन पीपल यूज इंटरनेट। सो हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा ये ऑनलाइन होगा, then it will ultimately help those who couldn't afford legal assistance on the ground level. They may can take it from the digital level. So these three are my main motives, and the challenge our company will legal professional motivate करेंगे, कैसे उन्हें convince करेंगे that they must come to our platform and help those who need them, right? So we haven't on that particular point yet, but still we are working on it. Okay.
Yeah, okay. That's amazing. Great, good name. I think first of all, it is a rememberable name. याद रहेगा. I think that's good. So just to justify like overall understanding, is it practo for lawyers? Is it something of that sort? Yes, sir, Jigyasa, you kind know, of. kind of. So is a practo for lawyers where lawyers are listed and there are hourly rates and then you can consult with them over a virtual call for Yes, a sir. better understanding and then all of that is happening, Yes, sir. right? Yes, Okay, sir. nice. So Isme, I have a question. I'll talk about the idea a little more, but before that, I have a question just to help you know me understand about the idea a little better. So when you have this legal, let's say there's a person sitting in Gujarat, okay, and he's facing a problem. He speaks Hindi, and then he gets connected Yes, sir. to let's say a lawyer in Haryana for that sake, ठीक है ना? And now he has raised the issue and he selected that lawyer and And somehow hmm, then there's a video call that is happening and he guided him कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं and all of that. yes, So that is okay. But my question is, ki, what is the next step? Like, how does that person actually like, take benefit of the legal services? And how would you bring the cost down? yes, sir. Yes, sir. So let me a little bit elaborate upon it. So, sir, there are a lot of cases. I mean, backlog बहुत ज़्यादा है courts में. And if you will try to look into the cases, there are a lot of cases जिनको ज़रूरत भी नहीं है court में होने की. I mean, वो Yeah. ground level पे through mediation, through arbitration, बहुत सारे forms है जिससे हम उनको court में जाने से पहले ही रोक सकते हैं. So our platform will help those clients with these mediation arbitration techniques, right? और गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से टेक्निक्स बना रखी है, तो हमारे जो लीगल प्रोफेशनल्स होंगे वो उनको उस तरीके से हेल्प करेंगे. एंड फॉर द फंडिंग पर्पस, I mean, we have looked into Startup India scheme and MSME schemes. They will try us to start this idea. अभी इतना इन डेप्थ जाके रिसर्च नहीं किया, बट एमएसएमई एंड स्टार्टअप इंडिया की जो कुछ स्कीम्स है जो कि इन सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए हेल्प करती है, एंड वी विल ट्राई टू हैव बेनिफिट ऑफ देम. Okay. That's like एंड सर interesting. Yeah. So I think इसमें I got a basic understanding. Uh, that's good. इसमें ना एक basic challenge है जो मैं आपको थोड़ा सा I would like to highlight it so that you're able to think about it a little more. There's a problem called chicken and egg problem. Okay. Chicken and egg problem is okay, simple सा. Who comes first, chicken or egg? What do you think? No, what is my question? Like, what do you think? Chicken पहले आया या egg पहले आया? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो चिकन, सकता है. ऐसा चिकन भी हो कुछ सकता भी है. हो सकता है. हाँ. चिकन आया एग से आया होगा. एग कहाँ से आया? चिकन से आया होगा. सो इट्स कॉल्ड चिकन एग प्रॉब्लम. तो ऐसा यूजुअली ना प्लेटफॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं ना तो देयर इज अ चिकन एग प्रॉब्लम यूजुअली, जहां पर क्या रहता है ना कि लॉयर्स जब आएंगे जब कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स जब आएंगे जब लॉयर्स आएंगे, है ना? तो यूजुअली प्लेटफॉर्म्स में ना ये एक चैलेंज फेस करते हैं. तो एक बार फिगर आउट करना थोड़ा सा कि आपका चिकन एंड एग प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. सेकंड इज यू पॉइंटेड आउट राइट. मेरा क्वेश्चन एक ये है कि देयर इज सप्लाई ऑफ लीगल हेल्प व्हिच इज सिटिंग आइडल, आई वुड से. ठीक है. बट ऑन टर्म्स ऑफ लाइक good legal advice. So it is not about the time and effort. It's more about what you say, in legal. Like I give Yes, you something, okay, do this, and then this will happen, and I'm giving you a solution or a direction probably. And that quality of the advice matters, you know. yes, sir. So can you help me understand the thousands of people who are sitting outside who have done law, Yes, on a scale of 1 to 10, what is the quality that they have? sir. 8. I will rate They them have 8. Yes, I mean, I have personally met a lot of them who are unemployed, but they are capable for providing good legal services to people. okay. I mean, having at least, they have graduated, right?
तो कुछ लेवल उनका नॉलेज का होगा. एक पर्सन है जिसको कोई नॉलेज नहीं है एंड ही हैव नो लीगल रिसोर्सेज, ही हैव नो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और एक ये पर्सन है जिसको थोड़ा सा लीगल नॉलेज है, वो ज्यादा बेटर उसको हेल्प कर पाएगा एज कम्पेयर टू वो उसको कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है. Okay, okay. Yeah, this is interesting. You can start doing some prototypes to start with, wherein you can actually take help of some local um, two people. One is a local court may, if there are people. Uh, have you gone through some resources which are there on legal, like जो cases print करते हैं and all of that? Do you know about such websites? Yes sir, Who law like, octopus, I mean, sir, there are several websites that works upon it. right. So I think what can happen just as a side, because they might be having a lot of database, you know, and their main business is to publish these papers which come from somewhere and all of that. So instead of figuring out the chicken egg problem wala piece, pitch them that let's do a pilot together, and you run. We'll take up 10 customers, ठीक है ना? We'll bring in the law people, you bring in the customers. आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप बेसिकली डाल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स भी उनको व्यू करते हैं, राइट? एंड लॉयर्स तो व्यू करते ही हैं उन वेबसाइट. So if you can not even if you don't want to partner, put a banner to their website so that some leads can come from the customers and some leads can come from the lawyers. And then you have a pool where you can do some experimentation. आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करा जा सकता है, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, and then धीरे धीरे करके you will be able to understand कि प्रॉब्लम एरियाज क्या है, because you will not be able to solve every problem from this, ठीक है ना? But yes, there are certain cases you'll be able to solve, है ना? But you have to figure out that niche, कि what kind of legal areas or issues can be solved using this platform. In fact, if this goes great, and if there are a lot of cases which are consuming a lot of precious time of the court, this can be a route for the government also, so to solve things in a little better way. So every lawyer can be on the platform and things Yes can happen. sir. I think this is a good idea, I would say. You can explore experimenting first. Talk to some senior lawyers, है ना? If you have some 4 or 5 senior lawyers or good lawyers, I would say, so that they're able to bring credibility to your platform. Okay, and then start solving the problems. Maybe starting में थोड़ा सा offline कर लो या online कर लो, and धीरे धीरे करके you will be able to understand कि क्या होगा. Zoom calls would be interesting because उसमें इतने resources नहीं लगते हैं, and that ways things can happen. So I think, yeah. Right. So I think it's a good idea. You can explore doing some experiments, prototype karo up, and फिर you'll be having a little more clarity on how to proceed. Okay. Yes. Okay. You have any questions for me? Yes sir, I have a question. सर Yeah. बेसिकली ये प्लान उन लोगों के लिए जो लोग फाइनेंशियली हेल्प नहीं ले पाते हैं, राइट? तो जस्ट लाइक योर एडवाइस कि ऐसी ऐसी वेबसाइट्स का हेल्प लो, इट विल हेल्प लॉयर्स टू कनेक्ट विद यू एंड देन यू मे स्टार्ट. बट हाउ विल आई कनेक्ट विद दोज पीपल, दोज हु रियली नीड द हेल्प? Okay. So आई मीन so how आई will मीन you find your customers? व्हाट सर? Yeah. How will you find your customers? Is यस that what you एग्जैक्टली, हाउ विल आई? यस सर. Okay. Okay, let's put it into a little छोटा सा group activity so that you can get more ideas. So I think a lot of people are here who have been listening to this idea, and it's a very interesting idea. It's a practo for startups, sorry, practo for lawyers. So what do you think? Where can Jigyasa can get these customers? How can they get the customers? आप अनम्यूट करके बताइए, जो भी आइडिया है दिमाग में बताओ. We can collate it and that can be interesting. थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे. ठीक है जी. ऋषिका आपकी साइड से भी चाहिए, एंड कृष्णगिरी आपकी साइड से भी, एंड देन वी हैव जतिंदर, देन
other people are also there. Karaj is there. हाँ जी, कैसे कैसे लाए कस्टमर्स? ओके परवीन, ओके वी हैव वन वन। हाँ जी, अनम्यूट करिए, बताएं। सर आई थिंक इसके पावित, लिए पहले पब्लिक को अवेयर होना भी जरूरी है ना कि ऐसा भी प्लेटफॉर्म है। लाइक इफ वी गो टू द रूरल एरिया, so they बिल्कुल don't सही, even know the डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अवेलेबल है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो फ्री में अपने काउंसिल ले सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहले तो वेरी अवेयरनेस होनी जरूरी है। लाइक बिल्कुल सही, इन सिटी अब जाते हैं सिटी एरिया में, वहाँ तो पीपल अवेयर है, उनको तो काउंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पे करने के लिए भी तैयार है, उनको काउंसिल मिल राइट जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको पता ही नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता कि क्या क्या राइट्स हैं उनके, तो राइट, कैसे वो हायर कर सकते हैं। तो पहले तो अवेयरनेस होनी जरूरी है, आप उसकी मार्केटिंग करनी अवेयरनेस, जरूरी है कि हाँ जी बिल्कुल कि सही। आप जाओ उस एरिया में। वैलिड पॉइंट सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ अवेयरनेस प्रोग्राम। नाउ अवेयरनेस कैन बी ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड ऐसे हो सकता है कि जो भी आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या फिर जो उसके आसपास के ना, मतलब देखो आपको क्या होता है ना, स्टार्टअप जो होते हैं ना, वो है ना अतरंगे आइडियाज निकाल के लेके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको कस्टमर्स कैसे मिले, है ना। अब आप सिंपल सा मतलब काफी चीजें कर सकते हो, पर है ना सब लोग क्या करते हैं ना, जब जब लीगल हेल्प चाहिए होती है या फिर सब लोग यूजुअली कोर्ट केस या कोर्ट में जाते हैं या डायरेक्शन, आपने देखा होगा वहां पर है ना कोई कैंटीन वाला होता है ना, कोई चाय वाला होता है, ऑल ऑफ Yes. दैट। उसको बोलो यार एक बैनर लगाना है तुम्हारे यहाँ पे, आप हमसे 500 रुपए ले लो। Hmm. उसमें एक मस्त सा लिखो, डू यू वांट टू गेट सम लीगल सर्विस ऑनलाइन, और our representative is here, low cost, and get solved all of your problem statements, whatever questions you want to ask, you can ask here, है ना। गिव देम अ फोन लाइन और गिव देम समथिंग, तो या कोई स्कैन करके फॉर्म भरवा लो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो होगा क्या कि जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग हो ना, और चाय वाले को थोड़ा सा एक और 500 रुपए देना कि यार थोड़ा सा बताना लोगों को मतलब what I'm trying to say is that you have to use guerrilla Hmm. techniques to figure out how things can be solved. So this is one idea, ठीक है। बड़ा अतरंगा सा है बट चलता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे एक स्टार्टअप था, आप लोगों ने एयरबीएनबी सुना है क्या? एयरबीएनबी नाम से एक स्टार्टअप है। तो एयरबीएनबी क्या करता है ना, जैसे ओयो Yes. करता है। ओयो क्या करता है, वो होटल्स को अपने ब्रांड के अंदर लेके फिर दे क्रिएट दीज प्रॉपर्टीज। एयरबीएनबी ने बोला यार हमारे पास है ना, घर पे हम 3 लोग रहते थे, हमारे घर में 4 कमरे थे। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार एक कमरे में कोई आके रह लो, Hmm. तो हमें कोई मिला ही नहीं, फिर क्या करें। तो उन्होंने बोला यार क्या करें यार। तो उसके बाद उसका एक दोस्त आया, कह रहा है मैं 2 दिन के लिए यूज करना चाहता हूँ, आ जाऊँ क्या, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो उसको लगा अरे वाह मजा आ गया। तो Hmm. ऐसे फिर उसने फेसबुक या अपने धीरे धीरे पता लगने लग गया कि अच्छा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। फिर दोस्तों में शुरू हो गया ये, तो ये ना धीरे धीरे करके शुरू होने लग गया। अब हुआ क्या, अब उनका कंपनी चल तो रहा था लेकिन स्लो स्लो चल रहा था, कि अवेयरनेस नहीं थी ना उनकी कंपनी के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शंस आए। जब जैसे ही इलेक्शंस आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उनकी सिटी में ट्रैवल करने वाले थे, ठीक है। अभी आपको ये पता होगा कि किसी भी सिटी में आप जहां पर, जैसे अभी G20 था Hmm. दिल्ली में, तो प्राइजेस ऑफ होटल्स गो अप लाइक क्रेजी। Yes. ऐसे होता है क्योंकि सब लोग अब बुक कर रहे हैं, Hmm. तो स्पेस कम है तो प्राइस हाई हो जाते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये सारे पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, यूएस में ये स्टार्टअप था। और इन्होंने बोला कि यार हम लोग क्या करते हैं ना, हमें इन सबको अवेयर करना है हमारे ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो हम ये करते हैं, एक तो ऑनलाइन डाल दिया कि हमारी वेबसाइट है ऐसे करके, साथ में ना कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स बनवाए। कॉर्नफ्लेक्स अगर आपने देखा हो तो एक बॉक्स में आते हैं, और तो इन्होंने 2 डब्बे बनवा दिए, जैसे पार्टी ए पार्टी बी, है ना। और एक कॉर्नफ्लेक्स करके ना, और ये बांटने लग गए। अब या सुपरमार्ट स्टोर जितने भी स्टोर थे ना, उसमें सब में डलवा दिए। अब लोग आए खरीदने के लिए, जो पार्टी का वो खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद के अपना खा रहे हैं। लेकिन क्रेजी हो गया, फ्री मार्केटिंग हो गई उनकी। एंड वो लोग करते क्या है, वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, लेकिन उन्होंने एक एक कैंपेन बनाया, ये इसको बेचने का। केलॉग्स केलॉग्स है या फिर जो भी अपना कॉन्फ्लेक्स है, वो बेच दिए उन्होंने। तो उससे उनकी मार्केटिंग इतनी हो गई, सबको पता लग गया, और फिर सबने फिर रूम्स बुक कर लिए। और
उनकी इतनी सेल हो गई कि वो उनका सोल्ड आउट हो गया, सारे उनके कुछ 200-300 घर थे जो उन्होंने अपने दोस्त वोस्त ये वो करके वेबसाइट पे डाले थे, सब सोल्ड आउट हो गए। तो अब कहने के लिए ये है कि ये उनका काम थोड़ी ना है कॉर्नफ्लेक्स करके और फिर बेचना और ये, बट दिस इज हाउ यू हैव टू कम अप विद आइडियाज, अतरंगी आइडियाज, सो दैट प्रॉब्लम सॉल्व हो एंड फिर चीजें निकल के आएंगी। तो स्टार्ट समथिंग ऑन दैट फ्रंट, ठीक है। मे बी यू कैन ऑल्सो डू दिस कि जो भी लॉयर्स हैं आप उनको आप ये भी कह सकते हो, आप है ना एक डेस्क लगा सकते हो। आई एम नॉट श्योर कहाँ ये लीगल कंपाउंड में कैसे होता है, बाहर लगवा दो अंदर लगवा लो, एंड उसके अंदर ऊपर फ्री लीगल एडवाइस कर दो, सुनो। तो हम लोग 500 लोगों को फ्री लीगल एडवाइस देंगे एंड पुट इन 2 people, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट व्हेंस यू स्टार्ट गिविंग लीगल एडवाइस, तो आप साथ में ना उनको ये भी बोलो कि हमारा ना एक वेबसाइट है, आप ऐसा कीजिए, मतलब छोटा अमाउंट में ना आपको लीगल एडवाइस घर पे मिल जाएगी, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, अरे ऐसा प्लेटफॉर्म है, अरे ऐसा प्लेटफॉर्म है, तब वो चीजें फैल सकती हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा ऑन ऑन दीज काइंड ऑफ आइडियाज, एंड फिर आइडियाज निकल के आएंगे। तो बेसिक मार्केटिंग से शुरू करो एंड देन धीरे धीरे करके आप यू कैन टेक इट अक्रॉस, ठीक है। Yes. और Thank ये भी कर सकते हो कि किसी को अगर केस होता है, मतलब सोच के देखना, किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है पहले, भाई क्या करता है, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? family lawyers. पहले तो फैमिली फैमिली लॉयर्स ढूंढते हैं कि भाई फैमिली में कोई किसी को जानता है क्या, या समथिंग। अब बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, या फिर इतना बड़ा नहीं बनाना कि मतलब Hmm. बिल्कुल ही खोल दिया सबके सामने, ठीक है। तो Hmm. पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो आप है ना छोटे छोटे वर्कशॉप्स दे सकते हो। वर्कशॉप्स कहाँ दे, आप अगर जैसे मैरिज में देख रहे हो, अगर आप मैरिज लीगल केसेस को देख रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप ऑफिस में वेबिनार्स या फिर सेशंस दे के आ सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ करके होता है और ये चीजें हैं, ये लॉज होता है और ऐसे करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब धीरे धीरे करके आप और भी लोगों के साथ जुड़ सकते हो, एनजीओज हैं बहुत सारे, उनके साथ आप एक कैंपेन बना सकते हो कि भाई हमें ना लीगल एडवाइजेस गांव गांव जाके ना वी डू सम वर्कशॉप्स, या फिर वी कैन ऑर्गेनाइज सम वर्कशॉप्स। तो वो क्या करते हैं, वो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे। आपके जो लॉयर्स हैं जो अभी यहाँ हाई कोर्ट पे बैठे, तो वो जाके उन रिमोट प्लेसेस पे जाके ना वो प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। एंड पुट अ मिनिस्क्यूल अमाउंट, जो भी ग्रांट से आपको आता है, यूजुअली ग्रांट से 5 लाख से 20 लाख के बीच में आता है, तो आप उससे पिकअप करके शुरू करो और धीरे धीरे करके बनने लग जाएगा फिर। तो या ठीक है, बट ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा आपको, मतलब बहुत डिफरेंट आइडियाज निकालने पड़ेंगे, तभी सॉल्व होगा। नहीं तो Yes. ऐसे पहले प्रॉब्लम है, क्या करें अब, इतना डिफिकल्ट क्यों कर रही हूँ मैं, लाइफ तो अच्छी चल रही थी। लाइफ तो अच्छी चलती है अंटिल यू वांट टू इसमें चेंज द करंट स्टेटस टू समथिंग डिफरेंट, है ना। Yes. चलो, गुड 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 Thank you. वर्क। Thank you. सर इसमें मैं एक और आइडिया ऐड करना चाहता हूँ। राइट, हाँ हाँ हाँ, जी गो सर, ऑन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक चैलेंज होता है कि कस्टमर कहाँ से है या क्लाइंट कहाँ से है, किसी को जरूरत है काउंसलिंग की। तो मैं जैसे देखता हूँ कि जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास अगर कोई कंप्लेनेंट आता है, तो ज्यादातर क्या होता है कि उनके पास कोई काउंसिल नहीं होता। और सपोज करो कि किसी पर एफआईआर होगी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया कुछ लोगों को किसी केस में, तो उनके एट ए टाइम जब वो अरेस्ट होते हैं तब भी उनके पास कोई काउंसिल नहीं होता। अगर उनके साथ कोलैब किया जाए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि ऐसा हमारा हम्म, प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम अक्यूज की तरफ से या जिन पर जो जो कार्रवाई हुई है पुलिस डिपार्टमेंट की, उनको हम जो भी उनकी कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी उनको हम हेल्प कर सकते हैं, तो उससे भी ये अच्छा मतलब कि क्लाइंटेज जा सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल दैट कैन ऑल्सो हैपन। आप मे बी पर्सनल लेवल पे कुछ मे बी डिपार्टमेंट्स में आप कर सकते हो, अगर इफ यू आर एबल टू क्रैक इट ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, वो दैट वुड बी वे बेटर। तो उसमें आप ये कह सकते हो भाई, आप पुलिस हो यहाँ पर, आप केसेस वेसेस करते हैं ये लोग, आपके एफआईआर वेफआईआर रहता है, यहाँ लॉयर बैठा देते हैं हम लोग अपना, ठीक है ना, इनसे बात कर लेंगे, जो आधे केस वैसे ही सुलझ जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू एक्सप्लोर। एक दो के साथ करके देखो, फिर समझ में आएगा। यू आर ऑलरेडी लॉयर, सो यू माइट बी नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। सही, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। चलो, आई थिंक वी हैव गॉट वन सजेशन फ्रॉम With परवित me. वीर। यस यस, यू कैन अनम्यूट Good evening, योरसेल्फ एंड। sir. I just wanted to add that many
legal institutions, say for example law colleges or law universities, have their own legal aid clinic. So here many people from rural areas in those colleges and institutions that are located there come for legal aid. So whenever and wherever these institutions feel that professional legal counsel is required rather than the counsel of teachers or say students of fourth year or fifth year, then we should network with these people, these legal aid clinics of institutions, so that such cases can be referred to them. Secondly, Right. many NGOs and organizations are already working in this sphere. So I would propose that you could, if you could occupy a niche area, say for example, uh, providing counsel for family law matters or say property disputes, then the organizations functioning as a whole could refer those specific cases to you, and To this is you, how yes. you could increase your clientele. नहीं, very very interesting ideas. I think that is amazing, क्योंकि अगर आपका niche define हो गया और जो और लोग हैं जिनका non core है, they can give you good clientele. Very good. देखा, group में we are very amazing group, and startups are a group thing. तो thank you Parvitvi for your suggestions. तो हाँ, आई थिंक मैं इसमें कह रहा था, स्टार्टअप्स आर ग्रुप थिंग्स, ठीक है ना. इट इज नॉट इंडिविजुअल जर्नी. ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे नहीं होता. जो भी प्रॉब्लम है ना, पुट इट आउट टू द वर्ल्ड. मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं अपनी कोई प्रॉब्लम फंसा हूं, मैं सबसे पूछता हूँ. मैं अपने कस्टमर से पूछ रहा हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर से पूछ रहा हूँ, अच्छा यार ये बता, इसमें ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, है ना. मैं अपने पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ, अपनी वाइफ से पूछ रहा हूँ, दोस्तों से पूछ रहा हूँ, वट एवर. ठीक है ना. तो वट एवर क्वेश्चन प्रॉब्लम यू हैव, दैट्स फाइन. आस्क फ्रॉम पीपल and people give it. This is a very fantastic idea. Audience have given across to you, and I hope you can experiment with them, and काफी interesting हो Yes. जाएगा. Yeah, awesome. चलो, I think that's great group work, guys. हमने जिज्ञासा को बता दिया है कैसे करना है. अब जिज्ञासा हमें मेंशन करेगी जब वो यूनिकॉर्न बनाएगी, तो कहेगी हाँ मैं एक सेशन में गई थी और वहां हमें गाइडेंस मिल रहा था. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. थैंक यू. Thank you, sir. I guess Pavitveer has one plan to share. Okay. Yeah, go on, please. Just a second, sir. Screen. So, good evening, everyone. I also just made this a rudimentary idea, which I believe that this is a field where a problem I believe exists. So, this is basically a business idea for a food item that is to be sold through under a common brand name. That is basically that brand would be an aggregator of various standardized vending units, like we see, for example, uh, Vadilal or Amul, which sell ice cream, or a recent startup in Chandigarh that has started selling cooler chai through these vents. So a similar model should be adopted for the mouth-watering uh, popular dish for North Indians, that is dosa, which is actually from the South Indian cuisine. So the two problems that I identified for the urban consumers in predominantly urban areas of, say, North Indian states of Punjab, that the first problem was that the availability of this specific food item is only in dine-in restaurants. And if, say, you were to order them from your residence, they usually arrive cold and soggy. And this item, if had fresh, if we eat this item fresh, it is best in that case scenario. And so for this reason, I thought that maybe we should adopt this model
for this specific item. But this is not limited to this model is not limited to this specific food item. Other food items that are also being sold in by informalized vendors that are not aggregated under one corporation, they can also follow this model to deliver fresh produce to urban consumers. Okay, that's interesting. Thank you. Thank you for your business idea. I have two questions for you. So one is, it's a vending machine which vends South Indian food. Is that what you're doing? Sir, it could take that form as well, say by employing some prototype that has automation built into it. But otherwise, a person could be employed to man that vend, and that vend could be owned by an aggregating corporation. Say, for example, the vends of Vadilal are owned by the corporation but run by the people. Right. No, I understand. So I'm just trying to understand. So you'd want to create a vending machine which vends South Indian products. Okay. Yes. Second is, are these products are these products stuffed in the machine? They're kept like they're made and then they're kept, or is this a machine which is creating them like live? No, sir, they are created, they are made on the spot so that it can be delivered fresh. So that solves the second problem that I highlighted. And the first one is solved through their delivery at your doorstep. Okay. No, I'm a little confused here. So when you say delivered at your doorstep, अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को खाना खाना है, मैं क्या करूँ? I want to have a dosa. What should I do? So, sir, the van would roll up to your house. Say, for we could maybe develop an app for this that could be on command, or maybe the people that are manning these vents could come at a certain time, and then they can serve on demand these food items. So I have to go somewhere, right, for this? Sir, basically, you just have to step out of your So I house. was stepping out already for the dosa point. मतलब my question is कि देखो ओके चलो ठीक है, मैं आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, लेकिन ना इसमें देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो अगर आप सॉल्व करोगे ना तो काफी इंटरेस्टिंग है. ठीक है. वन इज यू हैव फिगर्ड आउट कि नॉट एवरी फूड इज अवेलेबल एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम. इज दैट राइट? Okay, and some sort of this problem is solved by delivery, where these bike delivers and all of that. But then there is a add-on problem to it where the quality is not that good. Maybe it's soggy, it's not, all of that. So then it is a place where थोड़ा सा दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं. एक तो हमारे को फ्रेश खाना है, एक हमारे को कन्वीनियंस पे खाना है ना? यस. तो जो अभी अभी आप आइडिया जिस पे मतलब ओवरऑल पे कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा ना मिक्स है कि वेंडिंग कर रहे हो अगर तो वो फ्रेश कैसे बनेगा, बिकॉज देन इट इज अ डिफरेंट, इट इज अ मशीन, यू हैव इट हैज टू क्रिएट इट फ्रेश. It's a very separate process. I have seen dosa creating machines. You search on Google and stuff, there's those dosa creating machines, and there are these dosa ही देखा है मैंने. बट दे आर देन 2.5 लाख 3 लाख रुपए का मशीन होता है, एंड देन दे आर सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ लेट्स से कैंटीन और समथिंग, हु डोंट वांट टू make dosas every now and then. They just put the batter and then they get it done. Okay. So I would say on the current idea थोड़ा सा आप इसको explore और करो कि how do you want to amalgamate the vending piece and the fresh making piece, क्योंकि vending machine by concept is not fresh. It is packed food essentially, which is packed once a day, and then people eat, and then they take it across. सो वो एक चैलेंज है जो मेरे को अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इसका मतलब क्या है. क्योंकि जैसे हम कोवर्किंग स्पेसेस हैं, इफ देयर आर कोवर्किंग स्पेसेस, नाउ यू से दैट दिस मशीन इज सिटिंग इन द कोवर्किंग स्पेसेस, वेरी नाइस. What happens कि somebody presses a button and then the dosa comes out freshly made, and this is amazing. Okay, that's so that is one functionality can be interesting. लेकिन question is कि one is creating that machine, and second is how would we monetize it, because not everybody wants to eat dosa every time, and अगर पसंद नहीं आया तो खाएंगे ही नहीं. है ना?
सो आई थिंक दैट आर लाइक सम की एरियाज जो अगर आप इसको थोड़ा सा और डीकंस्ट्रक्ट करो, आई वुड से अभी इसको फॉर्म मत करो आइडिया को, मतलब अभी इसको डीकंस्ट्रक्ट करो और कि इसमें पीसेस कौन कौन से हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। Yes, sir. दैट इज वन। ठीक है, इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये भी एस्पेक्ट है, जैसे हाउ कैन यू नो गो इनटू यू नो आईडी फ्रेश या फिर ऑल दीज साउथ इंडियन ब्रांड्स. So there are some brands who do these packaged foods, okay? So they do this, add hot water and then you eat it. गुड टू गो पैकेज फूड होते हैं, पानी डालो और वो बन जाता है. इडली में पानी डाल दिया, इडली बन जाती है. डोसा तो नहीं बनता चलो, बट आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि बंदा जब डोसा खाता है वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए खाता है, वो यूटिलिटी ठीक है, यूटिलिटी के लिए कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आएगी ना तो फिर हम लोग ऐसे थोड़ा सा गोल गोल घूमते रहेंगे. तो आई वुड से थोड़ा सा और रिसर्च करो इसके बारे में कि प्रॉब्लम एरिया क्या है और उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देन इट विल बिकम अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज माय थॉट्स Okay. फॉर यू. Yes. ऑसम. Sir, I was just looking for guidance in this field because I did look for comments, but they said that I have to directly present my idea to you for comment. राइट राइट, तो दीज आर माय कमेंट्स. अभी तो फिलहाल आई वुड से एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, आई वुड से थोड़ा सा और रिसर्च करो इन दिस मार्केट. देयर आर मशीन्स अवेलेबल एंड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज दोज मशीन्स टू क्रिएट टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू वांट. Plus, I would want you to do at least 30 customer surveys. Okay, 30 customer surveys. Go to the market and talk to people. Okay, don't pitch them. Okay, so don't pitch them कि this is my idea, this is my startup. ये वो ये नहीं करना. टेल देम कि यार अच्छा, तो इंट्रीगिंग क्वेश्चंस जैसे अच्छा आप डोसा महीने में कितनी बार खाते हो, ओके कहाँ से खाते हो, ओके अच्छा कैसे डोसा कैसे पसंद है आपको, अच्छा क्या प्रॉब्लम एरियाज फेस करते हो. ठीक है, अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक यहाँ पर इन दिल्ली देयर इज अ लस्सी शॉप कॉल्ड अग्रवाल लस्सी वाला. नाउ दिस गाय इज फ्रॉम 55 years नाउ. ठीक है, आई लिव इन गुड़गांव, ठीक है ना, बट a lot of times when I'm traveling to Delhi, I take a detour to just be at his place, थोड़ा सा लस्सी वस्सी पी के आराम से फिर वापस जाएंगे. लस्सी 40-50 रुपए की है, ठीक है ना, प्रोडक्ट लेकिन बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत मस्त है. तो what attracts usually customers back is the taste that they have on their taste palette. It's not about convenience. मेरे को convenient नहीं है, मैं गुड़गांव से दिल्ली जा रहा था यार, मेरे को I have to drive 20 kilometers to get to that place. तो फूड हैज दैट काइंड ऑफ करिश्मा, बट थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करोगे तब क्लैरिटी आएगी इन दिस फील्ड. ऑल्सो जैसे आपने हॉट एंड सॉगी बोला, तो देर इज अ फील्ड कॉल्ड कीपिंग द फूड हॉट. तो देर इज अ सेपरेट फील्ड फॉर दिस, आप इसमें एक्सप्लोर करना. तो उसमें कुछ केमिकल्स बना रहे हैं लोग, कुछ ने बना लिया है, कुछ रिसर्च में है ऐसे करके. तो वो एक कुछ पैन होता है, उसमें पानी डाल दो या कुछ चीजें होती है वो कर दो, और वो है ना वो बस कुछ बॉईल करके ना खाना गर्म कर देता है. सो दैट कैन बी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर. तो आई वुड से थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अभी आइडिया फॉर्म नहीं हुआ है. एंड टॉक टू एटलीस्ट 30 पीपल अबाउट हाउ दे लाइक देयर डोसा, वेयर डू दे बाई फ्रॉम एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन अंडरस्टैंड द वेंडिंग एंड देन प्रॉब्लम एरिया निकल गया फिर सॉल्व करने जाना. अभी करने जाओगे फंस जाओगे फिर. ठीक है, सही है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. थैंक यू फॉर मेकिंग मी हंग्री. अब मुझे डोसा खाने का जी कर रहा है. Thank you, sir. चलो, आई थिंक दैट्स अमेजिंग. सो आई थिंक वी आर डन. इशिका. Thank you. Thank you so much, sir, for such a fantastic and knowledgeable session. I believe your Right. guidance will really help them to build a strong foundation for their future. Yeah, no, I think that's amazing. I'll just say a basic few words for all the entrepreneurs. As I said in the middle also, understand करना सबकी ना एक जगह होती है सोसाइटी में, चीजों में. एज एंटरप्रेन्योर्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर, मुझे नहीं पता आप आगे जाके क्या बनाओगे, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत अच्छी चीजें बनाओगे, लेकिन एक जर्नी है. और वो जो जर्नी है ना वो थोड़ी सी ना, मतलब ऐसा नहीं है पॉइंट ए पॉइंट बी, आज आइडिया ले लिया यहाँ सक्सेस बैठी है हो गया. नहीं 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 नहीं, बहुत सारे फेलियर्स और खुद को ग्रो करना है. और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि करते करते है ना, हो रहा था ऑर्डर आ गया लेकिन है ना ऑर्डर कैंसिल हो गया, पेमेंट आ गई लेकिन पेमेंट किसी और ने ले ली, कोई और भाग गया कुछ और कर रहे, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स. जो आपको चीज डेवलप करनी है विच इज
ability to handle all of those things and solve problems, get things done types. ठीक है ना? If you have that kind of attitude with an open mindset, आप चीजें कर पाओगे. तो प्रॉब्लम्स ढूंढो, आई वुड से. कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है. आपने डोसे की प्रॉब्लम ढूंढी है, थोड़ा और रिसर्च करो. अभी अभी ऊपर ऊपर से अभी प्रोडक्ट बनाने पे मत जाओ. इनफैक्ट मैं सेम जिज्ञासा को भी मैं सेम चीज कह रहा हूँ, कराज को भी मैं सेम चीज कह रहा हूँ. अभी प्रोडक्ट बनाने पे मत जाओ, क्योंकि हमारे जैसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट करने लग जाते हैं ना, हमारा ना ऐसा फोकस होने लग जाता है कि ना, और एक चीज को हम फिर बनाना शुरू करते हैं. वो ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कस्टमर अंडरस्टैंडिंग करो, मार्केट अंडरस्टैंडिंग करो, सेल्स पाइपलाइन का फंडा क्या है. जब वो अंडरस्टैंडिंग होगी तब आपको क्लैरिटी होगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है. इनकी बहुत सारी जो भी आप फील्ड में करना चाहते हो ना, इनकी केस स्टडीज आती हैं. ऑल दीज IIMs हैं या फिर कुछ भी ऐसा, पहले ब्रांड्स ढूंढ लो, उनकी केस स्टडीज लिख दो. काफी MBA के बच्चे और काफी लोग बच्चे अपने ना ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनके ऊपर हैवी हैवी रिपोर्ट्स होती हैं. पढ़ो एक बार जाके कि प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, एंड अगर उन प्रॉब्लम्स को पिकअप कर सकते हो देन इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? बाकी आई थिंक एवरीवन इज सुपर यंग हियर, एंड इंक्लूडिंग me. So काफी अच्छी एनर्जी है, and let's build this country across. This is not a venture you're building for yourself, you're building it for your country. And when you have this kind of mindset, a lot of people get attracted to your venture to, push it to a very interesting stage. So I think PCC is also doing something amazing. Somewhat similar. आपने कुछ इंटेंट दिखाया कि यार कुछ आइडिया करना है. अच्छा, इन्होंने कहा कि हम कुछ कर सकते हैं. फिर they called me, and it is amazing. Thank you, Ishika, and Thank you so Punjabi. much. It's our चलो, pleasure. ठीक Okay. है. Awesome. All the best, guys. I'm looking forward to see your ventures coming up pretty soon, and pitch us. We'd love to hear and if they're fit, we would love to invest also, and then we can see how it rolls. Okay. Chalo. I think that's amazing. Thank you. Take care. Bye bye.